Let us check a question. Two forces of magnitudes 3 Newton and 4 Newton respectively are acting on a body. Calculate the resultant force if the angle between them is first case 0 degrees, second 180 degrees, third 90 degrees. Now let us assume that there is a body here. एक ब्लॉक को let us consider a body. Now there are two forces acting on it. One is 3 Newton, another is 4 Newton. Let it be 3 Newton and let it be 4 Newton. Now at 0 degrees, this is the representation for case 1. If it is 0 degrees, the resultant is R equals to 3 plus 4 newtons or 7 newtons. Bit 2. If this is the body and then this is 3 Newton and this is 4 Newton. Resultant is plus 4 Newton minus 3 Newton. This is as per the sign convention, which says going to the left is negative and going to the right is positive. So this is 1 Newton, right? Whenever there is a net force, whenever there are two forces acting in opposite direction, जब दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, सो जो भी नेट फोर्सेस होता है या फिर नेट फोर्स होता है उसका जो डायरेक्शन होता है दैट इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ लार्जर फोर्स. इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट एक्चुअली. इट्स लाइक एक बॉक्स है, एक साइड से आप पुश कर रहे हो 3 न्यूटन फोर्स से, दूसरे साइड से आपका एक दोस्त पुश कर रहा है 4 न्यूटन फोर्स से. सो द लार्जर फोर्स विल प्रिवेल. जिसका ज़्यादा फोर्स है उसी फोर्स के डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, या फिर उसी फोर्स के डायरेक्शन में अनबैलेंस्ड फोर्स रहेगा. तीसरा केसेस जब 90 डिग्री है, यानी कि वन इज 3 न्यूटन, सेकंड इज 4 न्यूटन एंड इसका रिजल्टेंट आप लोग को निकालना है. यहाँ पे थीटा क्या है? 90 डिग्रीज. नाउ 90 डिग्रीज के केस में क्या होगा? रिजल्टेंट इज रूट ओवर ऑफ a square plus b square plus 2ab cos theta. Now the angle theta between them is 90 degrees and cos 90 is what? cos 90 का वैल्यू क्या है? That is 0. cos 90 is 0. So that means a square plus b square. That means 3 square plus 4 square. That is equals to 5 Newton, right? I hope आप लोग को ये समझ में आ गया. Now
ये जो सॉल्व हुआ है फर्स्ट केस में और सेकंड केस में, यू मस्ट हैव रियलाइज्ड कि फॉर्मूला को यूज़ नहीं किया गया है, बट इट्स रियली सिंपल. ये देखो, द एंगल बिटवीन 3 and 4 न्यूटन्स इज 0 degrees here. That means r square equal to a square plus b square plus 2ab cos 0 degrees, right? That means a plus a square plus b square plus 2ab. Why? Because cos 0 is equals to 1. That means a plus b whole square. That simplifies r equals to a plus b. Similarly, cos 180 का क्या वैल्यू है? That is -1. एंड अगर cos 0 की जगह cos 180 होता, it would have become a square plus b square minus 2ab. That means a minus b equals to r. So ये पहले केस के लिए एंड ये दूसरे केस के लिए सिंप्लीफिकेशन है, so that you can connect. Now इसमें और एक चीज़ भी हो सकता है, that you have to find out the angle between the resultant and one of the forces. से हमको ये बोला गया कि 4 न्यूटन फोर्स के साथ कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट. सो लेट दिस बी 4 न्यूटन, लेट दिस बी 3 न्यूटन, जैसे ड्रॉ किया गया है वहाँ पे, एंड ये तो 90 डिग्री है. अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने से वी हैव समथिंग लाइक दिस. ये रिजल्टेंट वेक्टर है, इस एंगल को अल्फ़ा मान लो, ठीक है. अब फॉर्मूले के हिसाब से जो हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में, tan अल्फ़ा इक्वल्स टू b sin थीटा बाय a plus b cos theta. That basically means 3 sin 90 by 4 plus 3 cos 90. That basically means tan alpha equals to 3 by 4, or alpha equals to tan inverse 3 by 4. I think that's your answer. एंड इसका वैल्यू आप लोग कैलकुलेटर से निकाल सकते हो. इट शुड बी अराउंड 37 degrees, right? Similarly, let us move on to another question. Two vectors having equal magnitude of 5 units have an angle of 60 degrees between them. Find the magnitude of their resultant vector and its angle with respect to one of the vectors. So, how do we approach it? First is, दोनों के दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम है. सो से
ये 5 न्यूटन का है, दिस इज ऑल्सो 5 न्यूटन्स and the angle between them is 60 degrees. So resultant क्या है? Square root of a square plus b square plus 2ab cos theta. That means 25 plus 25 plus 2 into 5 into 5 into cos 60. Both a and b have equal magnitudes, that is 5 newtons. Hence 2 into 5 into 5. Now this should be giving you a value of 50 plus 50 cos 60. What is the value of cos 60? 50 plus 50 into 1 by 2. That means 50 plus 25. That means root over of 75. That is root over of 25 into root over of 3. That is 5 root 3. So this has been simplified. 5 root 3 units. And again इसका जो एंगल होगा tan alpha. Alpha मतलब assume this is your resultant. Let us say that this angle is alpha. So tan alpha is 5 sin 60 by 5 plus 5 cos 60. 60 दोनों जगहों से अगर 5 कॉमन ले लोगे, इट इज़ sin 60 divided by 5, 1 plus cos 60. 5 5 कैंसल्ड. sin 60 का वैल्यू क्या है? √3/2 बाई cos 60 का वैल्यू क्या है? 1 प्लस cos 60 का वैल्यू 1/2 है. सो √3/2 डिवाइडेड बाई 3/2. ठीक, दैट इज 1 बाई √3. सो इससे क्या पता चला? tan अल्फा इक्वल्स टू 1/√3 और अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/√3. That is equals to 30 degrees. So I hope this type of questions you can solve from now on, right? Let us move to another question. A vector A and B make angles of 20 degrees and 110 degrees respectively with the x-axis. The magnitude of these vectors are 5 meters and 12 meters respectively. Find the resultant vector. ठीक है, यहाँ पे दो वेक्टर्स के बारे में मेंशन किया गया है.
वो लोग x के साथ जो एंगल्स बनाते हैं वो भी मेंशन किया गया. फॉर एग्जांपल दिस इज द x एक्सिस. एज्यूम एक वेक्टर जो है दैट मेक्स 20 डिग्रीज विद द x एक्सिस. वेक्टर a मान लेते हैं. दूसरा वेक्टर जो है दैट मेक्स 110 degrees with the x-axis. B. Find the resultant vector. अब इन दोनों के बीच में क्या एंगल बनेगा? अगर ये टोटल एंगल 110 है विथ x एक्सिस एंड ये एंगल 20 है, तो जो बीच का एंगल होगा दिस विल बी 110 डिग्री माइनस 20 डिग्रीज, that is equals to 90 degrees, right? Now that means ये दो b और a वेक्टर्स जो दोनों हैं उनके बीच में जो थीटा है that is 90 degrees. Now रिजल्टेंट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ a वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? 5. सो 5 स्क्वायर. दूसरे वेक्टर का क्या है? 12 स्क्वायर. ठीक. प्लस 2 इंटू 5 इंटू 12 इंटू कॉस 90. Keeping in mind cos 90 is equivalent to 0. So 120 into 0. The resultant vector can be written like 5 square plus 12 square plus 2ab cos theta 25 plus 144 plus 0. That is 169 root over. And that is 13 meters. That is the magnitude of the resultant vector. Again, एक बार तो मैग्नीट्यूड हम लोगों ने निकाल लिया, फिर वही एंगल वाली बात tan अल्फ़ा. अब tan अल्फ़ा का क्या सीन होगा? दैट इज b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा. So a is 5 meters and b is 12 meters. So 12 sin 90 by 5 plus 12 cos 90, that is 12 by 5. That means alpha equals to tan inverse 12 by 5 with respect to vector A. Now this kind of problems should be easy for you. We will continue with some more questions in the next session, and till then your task is to solve similar kinds of questions, at least 10 to 20 questions, and let me know the same in the comment section. Thank you.